Hello and welcome back to the channel. This is lecture 2 on the chapter The Living World for NEET UG. I'm Dr. Mir and you are tuned into EP classes for NEET UG, MBBS and NEET PG. In today's lecture, we'll come across some taxonomic aids which include herbaria, botanical gardens, museums, zoological parks, and the very important taxonomic key, wherein we learn how to identify an organism using keys. और taxonomic key के हम दो types पढ़ेंगे, bracketed key और indented key. And after that, we'll see some concept-based MCQs. So stay focused, avoid distractions if any, sit back and enjoy the video. Taxonomic aids. Taxonomic aids are the tools that aid in proper taxonomic studies of various organisms. And from our last lecture, we now know that taxonomic studies include identification, nomenclature, and classification of an organism. And these taxonomic studies are helpful in agriculture, in forestry, in knowing our bioresources, and much more. Some of the important taxonomic aids include, सबसे पहले बात करते हैं herbariums की, herbaria की. A herbarium is a collection of pressed, dried, and preserved plants mounted on paper sheets, properly labeled, systematically arranged, and available for reference or study. इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम देखते हैं एक herbarium बनाते कैसे हैं. So steps for making a herbarium. Step number 1, collection of specimen. इसके लिए हम field visits करेंगे and we'll see for ourselves कि सबसे suited plant, मतलब जिसके सारे parts vegetative as well as reproductive intact हों, वो हम pick करेंगे. In short, we pick the fittest and call it our specimen. Now remember, holotype specimen is the original specimen. A new specimen, when the original one is lost or damaged, is called a neotype specimen. Okay. तो ये specimens collect करने के लिए, it's obvious that we require some tools like scissors, cut करने के लिए, or diggers to dig, etc. The collected specimens are carried in a box called vasculum. A vasculum is nothing but a box which avoids loss of moisture so that specimens dry होके distort ना हो. Okay. Step number 2. Specimen dried in newspapers. The collected specimens are spread and dried under proper care by keeping them between dry newspapers. Newspapers में हम specimen हमारा रखेंगे dry होने के लिए. Okay. Step number 3. Specimen dried further in a plant press. Plant press में we have 2 boards with straps जिनको हम टाइट बांध के रखते हैं इन 2 बोर्ड्स के अराउंड. हमारे स्पेसिमेन को इन बोर्ड्स के बीच में रख के जब हम ये स्ट्रैप्स बांधते हैं तो प्रेस होके हमारा स्पेसिमेन और ड्राई होता है. ओके, so that was plant press. Now step number 4. Specimen is mounted on a thick paper या card herbarium sheet. इसके लिए
we use adhesives or sew the specimen to the sheet. या हम adhesives यूज़ करेंगे या सीधा सिलाई करेंगे हमारे specimen की इस herbarium sheet के साथ. The sheet has predefined set measurements. It's 29 centimeters wide and 41.5 centimeters in length. एक herbarium sheet के lower right corner पे we have a printed label which gives the following information about the specimen. Name of institution, मतलब कौन सा institution ये herbarium बना रहा है. Scientific name of plant, common name, English name, family इस plant की, locality किस locality से हम ये specimen ले रहे हैं, date of collection and name of collector. ये सारी information हमें ध्यान से देखनी है क्योंकि often times यहाँ से questions पूछे गए हैं. Okay. Now these specimens are stored in properly designed, disinfected herbarium cabinets and systematically arranged for future references, for researches, for studies and whatnot. Okay. Major herbaria. Major herbaria of the world में हम याद रखेंगे खाली Royal Botanical Garden, Kew, England, जिसमें 6 million specimens हैं. और हमारे इंडिया में हमारे पास है Central National Herbarium of the Indian Botanical Garden, कोलकाता. To be more precise, ये हावड़ा में है. और है हमारे पास National Botanical Research Institute, लखनऊ. Oftentimes, जो अच्छे botanical gardens होंगे, they'll necessarily set up a herbarium also. इसलिए Indian Botanical Garden में हम देख रहे हैं ये herbarium, Central National Herbarium. Okay. Role of herbaria. I reckon ये आप खुद से कर सकते हैं. So do it yourself. Homework है आपके लिए. अब हम आते हैं next taxonomic aid, Botanical Gardens पे. तो Botanical Garden is a place where plants are grown for scientific study, for conservation, for public education, aesthetics and recreation. Easy. Each plant is labeled indicating its scientific name, its common name, English name and its family. अगर आपने विजिट किया होगा कोई बोटेनिकल गार्डन तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हर एक प्लांट स्पीसीज़ के साइड में एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिस पे इस प्लांट की इंफॉर्मेशन दी होती है. ओके. मेजर बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड में हम फिर से यही याद रखेंगे, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड. और इंडिया में फिर से इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा का और नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ. Role of botanical gardens. Again, sort it out yourselves. It's easy. Okay, now coming to the next taxonomic aid, which is zoological museums. Zoological museums are used for preservation, storage, and exhibition of preserved inanimate plants and animal specimens for study, research and reference. यहाँ पे inanimate plants and animals का मतलब dead plants and animals को हम preserve करते हैं हमारे zoological museums में. हमारे museums में insects are preserved in insect boxes. Large animals are stuffed. Large animals के हम visceral organs या internal organs को remove करते हैं. Soft decomposable tissues remove करते हैं and are then stuffed. Museums have amphibians, reptiles, etc. in preservative fluid-filled glass jars. Is preservative fluid
में 5% फॉर्मेलिन होता है एंड 70% इथाइल अल्कोहल होता है। और मेजर म्यूज़ियम्स इन इंडिया में हम खाली याद रखेंगे इंडियन म्यूज़ियम ऑफ बंगाल, इतना आप याद रखेंगे तो काफ़ी है। और भी म्यूज़ियम्स या और भी ज़ूलॉजिकल पार्क्स आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे जितने हमने डिस्कस की उतनी काफ़ी है। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड, zoological parks या zoos, an enclosed place where wild animals are kept and protected and provided conditions similar to their natural habitats. Zoological parks increase public interest in wildlife, जो बहुत ज़रूरी है। Zoological parks aim at preserving many forms of wildlife which are at a brink of extinction. CBSG, which is Captive Breeding Special Group, कैप्टिव ब्रीडिंग स्पेशल ग्रुप या CBSG एक इनिशिएटिव है IUCN का, which is encouraging the zoological parks to breed the endangered wildlife species and evade the risk of them getting extinct. IUCN या International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. Now we come to another very important taxonomic aid called key. A key is a set of contrasting characters that help in the identification of an organism by selecting and eliminating the characters according to their presence or absence in the organism under study. One more time. A key is a set of contrasting characters that help in the identification of an organism by selecting and eliminating the characters according to their presence or absence in the organism under study. Contrasting characters say, for example, presence of external layers, absence of external layers, ये एक contrasting character हो गया. Likewise, the animal can fly, the animal cannot fly, ये एक और contrasting character है. इसी तरह से a set of these contrasting characters एक key बनाती है. And how does a key help us identify organisms, चाहे plant हो, चाहे animal हो? That's what we'll be discussing now. But before that, we should know कि दो तरह की keys होती हैं. Bracketed key, indented key. Let's talk of bracketed key first. In a bracketed key, pairs of contrasting characters are used for identification of the organism. And these characters are not separated by intervening subdividing characters. अभी आप सिर्फ इतना समझो that in a bracketed key, pairs of contrasting characters are used for identification of the organism. तो bracketed key में we'll have a set of contrasting characters in pairs, जैसे presence of external layers, absence of external layers. ये एक pair हो गया. The animal can fly, the animal cannot fly. ये दूसरा pair. The animal has limbs, the animal has no limbs. ये तीसरा pair हो गया. The animal has gills, the animal has no gills. इसी तरह से ये चौथा. Bracketed key में इस pair को couplet कहते हैं. Couplet. और individual statements को lead. जैसे presence of external layers, absence of external layers. ये एक couplet है. खाली presence of external layers ये एक lead, absence of external layers ये दूसरी lead. So this is how our bracketed key will look like. और इसे हमें ध्यान से देखना है. And in bracketed key,
different numbers are assigned to different characters. Different numbers are assigned to different characters. जैसे नंबर 1 को हमने कैरेक्टर दिया एक्सटर्नल एयर्स का, नंबर 2 को कैरेक्टर दिया फ्लाइट का, 3 के पास है कैरेक्टर लिम्स का, and here 4 is for gills. And these numbers are bracketed. Brackets में हैं ये numbers. Hence the name bracketed key. इसी वजह से इन numbers का यहाँ पे इन brackets में होना, इसी वजह से इस key को bracketed key कहते हैं. And now we'll learn how to identify an organism using bracketed key. Say for example, हमारे पास animals हैं जैसे bat, एक cat, एक fish, एक frog और एक snake. इनको हमें identify करना है. All right. So when we analyze the first couplet, which is about external airs, इसमें presence of external airs, इसमें presence of external airs वाली statement भेज रही है हमें couplet number 2 पे, which is about flight, जिसका पहला statement है that the animal can fly. तो जोड़ते हैं presence of external airs and the animal can fly as well. यानी external airs भी हैं और animal fly भी कर सकता है. So I think for a while and I get to the conclusion कि ये bat है. Again, presence of external airs ने भेजा था हमें कपलेट नंबर 2 पे, और कपलेट 2 की अब अगर हम दूसरी स्टेटमेंट उठाएं which says the animal cannot fly, तो अगेन जोड़ते हैं presence of external airs and the animal cannot fly. So think about it and it will come out to be cat. Okay, now पहले कपलेट की दूसरी स्टेटमेंट या लीड which is the absence of external airs भेज रही है मुझे कपलेट नंबर 3 पे which is about the character of limbs. तो जोड़ते हैं हम absence of external airs और तीसरे कपलेट की पहली स्टेटमेंट which is the animal has limbs. External airs absent हैं और limbs present हैं. Again, if you think about it, ये frog है. Frog में external airs absent और limbs present होती हैं. फिर से absence of external airs ने भेजा हमें couplet number 3 पे, and this time we consider the second statement of couplet 3, which is the animal has no limbs. This further asks us to go to couplet 4, which is about the character of gills. तो जोड़ के देखते हैं जहां जहां से हम आ रहे हैं. Absence of external airs है. The animal has no limbs. और कपलेट 4 की पहली स्टेटमेंट the animal has gills. एक्सटर्नल एयर्स नहीं है, लिम्स नहीं है, गिल्स प्रेजेंट हैं. तो आई थिंक एंड आई से ये फिश है. और अगर कपलेट 4 की दूसरी स्टेटमेंट को ऐड करें इन कैरेक्टर्स के साथ, तो हमारे पास जो अब कैरेक्टर्स होंगे वो ये हैं: एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एयर्स,
absence of limbs, and absence of gills. मतलब एक्सटर्नल एयर्स एब्सेंट हैं, लिम्स एब्सेंट हैं और गिल्स भी एब्सेंट है। तो मेरे ख्याल से वो स्नेक होगा। स्नेक में एक्सटर्नल एयर्स नहीं होते, लिम्स नहीं होती और गिल्स भी नहीं होती। और इस तरह से हमारे एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन हो गई। Okay, now we talk of indented key. Indented key provides sequence of choices between two or more statements of characters. इसमें खाली contrasting characters in pairs नहीं होते, जैसे bracketed key में देखे थे। इसमें contrasting characters are separated by intervening subdividing characters. मतलब इसमें contrasting characters के in between और characters की मदद लेते हैं। एग्जाम्पल से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले no role of numbers in indented key. Indented key में numbers का कोई रोल नहीं होता। So I won't even mention them. Okay. So we were saying that indented key provides sequence of choices between two or more statements of characters, and contrasting characters are separated by intervening subdividing characters. तो दो contrasting characters मैंने लिख दिए हैं, जैसे external layers present and external layers absent. ये दो contrasting characters हैं। इन्हीं के बीच की हम बात कर रहे थे कि the contrasting characters are separated by intervening subdividing characters. जैसे यहाँ पे wings present, wings absent, ये intervening subdividing character हो गया। और जब हमने बात की थी bracketed keys की, there we said that the contrasting characters are not separated by any intervening subdividing characters. They only form pairs. और यहाँ पे ये जो intervening subdividing characters हैं, इनको मैं हमारे इस character के बिल्कुल नीचे नहीं लिख रहा। इसके बिल्कुल नीचे नहीं लिख रहे हैं हम, इसको हम थोड़ा साइड करके लिख रहे हैं यहाँ पे। And it is due to this reason that this key is called an indented key. Okay, तो हम इस given indented key को use करते हैं and we try to identify our animals. Say we have to identify the same animals we identified in bracketed key. एक bat था, एक cat थी, एक frog, एक fish और एक snake. तो external layers present, external layers absent, ये हमारे contrasting characters या statements हैं। इसमें पहली statement यानी external layers present के बाद यहाँ given intervening subdividing characters हैं wings present, wings absent. Okay, तो characters जोड़ना start करते हैं and identify करते हैं हमारे given animals को। External layers present and wings present. So if you think about it, ये bat है। Again, external layers present and wings absent. ये cat होगा, होगी, जो भी है। Moving on. External layers absent, limbs are present. So if you think about it, ये frog होगी। Okay, now listen carefully. External layers absent and limbs absent. इसमें तो fish और snake दोनों include होते हैं। दोनों में external layers absent है और limbs भी absent है। So we move to the next intervening subdividing character, which is about gills. But इस character को, यानी limbs absent वाले character को, इसको भी जोड़ के रखना है। So remember,
इस कैरेक्टर को भी इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ना है। तो जोड़ते हैं कैरेक्टर्स। एक्सटर्नल लेयर इज एब्सेंट, लिम्स एब्सेंट, एंड इफ गिल्स आर प्रेजेंट तो ये फिश है। फिश में गिल्स होती हैं, लिम्स नहीं होती और एक्सटर्नल लेयर्स भी नहीं है। आगे चलते हैं। एक्सटर्नल लेयर्स एब्सेंट, लिम्स एब्सेंट एंड गिल्स इफ प्रेजेंट तो ये स्नेक है। Let's discuss some related MCQs now. Pause the video whenever you feel like it and answer the questions for yourselves. इनके आंसर्स मैंने वीडियो के एंड में दे रखे हैं। So question number 1. A collection of pressed, dried and preserved plants mounted on paper sheets, properly labeled, systematically arranged and available for reference or study is termed as Botanical Garden, Herbarium, Botanical Museum, Botanical Paleontological Institute. Question number 2. During field visits, collected plants or plant parts, specimens, are kept in polythene bags, a box called vasculum, paper bag, jute bag. Question number 3. Which of the following exhibits living animals? Zoological Museum, Zoological Park, both A and B, neither A nor B. CBSG stands for Capture Breeding Survival Group, Captive Breeding Specialist Group, Culture Breeding and Security Group, Captive Breeding and Security Group. Question number 5. After initial drying of the plant specimens between the folds of newspapers, complete specimens are further dried in sunshine, under low intensity of light, in a plant press, in vasculum. We have discussed this earlier. Okay, question number 6. The specimen used for original publication by the author is isotype, syntype, holotype, lectotype. Question number 7. The famous Botanical Garden of Kew is located in India, England, Germany, France. Question number 8. The label of a herbarium sheet does not carry information on date of collection, name of collector, local names, height of the plant. तो ये आपके आंसर्स हैं। तो आप क्रॉस चेक करें अपने आंसर्स के साथ। Thank you for watching. I'll see you in the next video. This is EP Classes and I am Dr. Mir signing off. Thank you.